दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सड़क या एयरपोर्ट के कंक्रीट पेवमेंट पर जब ट्रक का 50 टन लोड पड़ता है तो वो टूटता क्यों नहीं? या फिर साइट पर बनी बीम का कंक्रीट आखिर कितना खींच टेंसाइल फोर्स झेल सकता है? किताबें आपको बस FRB=PL/BD² फॉर्मूला रटाती हैं, पर कोई ये नहीं बताता कि इस फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट झुकाव ताकत परीक्षण में अगर ए यानी फ्रैक्चर की दूरी थोड़ी सी भी गलत हुई तो आपकी पूरी लैब रिपोर्ट कूड़ा बन सकती है। मेरा 20 साल का साइट एक्सपीरियंस कहता है कि ये टेस्ट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि आपका कंक्रीट टूटने से पहले आपको कितना वार्निंग टाइम देगा। आज हम IS 516 के इस सबसे जरूरी टेस्ट को साइट के चश्मे से समझेंगे, जानेंगे कि लोडिंग रेट का क्या महत्व है, रोलर डायमीटर 38 mm का क्यों मत, और वो कौन सी 3 गलतियां हैं जो अक्सर फ्रेशर इंजीनियर इस टेस्ट में करते हैं। अगर आप एक असरदार और टिकाऊ स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। 8. Test for flexural strength of molded flexure test specimens. 8.1. This clause deals with the procedure for determining the flexural strength of molded concrete flexure test specimens. 8. Molded flexure test samples की flexural strength निकालने की प्रक्रिया यह clause molded concrete flexure test specimens की flexural strength determine करने की पूरी प्रक्रिया को बताता है। 8.2 Apparatus. 8.2.1 The testing machine may be of any reliable type of sufficient capacity for the tests and capable of applying the load at the rate specified in 8.3. 8.2.1 Testing machine load apply करने वाली machine testing machine कोई भी reliable type की हो सकती है, बस उसमें sufficient capacity हो और वह load apply कर सके उतनी rate पर जितना clause 8.3 में दिया है। The permissible errors shall be not greater than ±0.5% of the applied load, where a high degree of accuracy is required, and not greater than ±1.5% of the applied load for commercial type of use. जहां high accuracy की आवश्यकता हो, वह permissible error ±0.5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और सामान्य commercial use के लिए error ±1.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। The bed of the testing machine shall be provided with 2 steel rollers, 38 mm in diameter, on which the specimen is to be supported. Testing machine के बेड पर 2 steel rollers, 38 mm diameter लगाए जाते हैं, जिन पर specimen support किया जाता है. And these rollers shall be so mounted that the distance from center to center is 60 centimeters for 15.0 centimeters specimens, or 40 centimeters for 10.0 centimeters specimens. Rollers ऐसे mount होंगे कि उनकी center to center distance 60 centimeters for 15 centimeter specimen, 40 centimeters for 10 centimeter specimen. The load shall be applied through 2 similar rollers mounted at the third points of the supporting span. That is, spaced at 20 or 13.3 centimeters center to center. Load 2 similar rollers के through लगाया जाएगा जो supporting span के third points पर लगाया जाते हैं. 20 centimeter spacing for 15 centimeter specimen, 13.3 centimeter spacing for 10 centimeter specimen. The load shall be divided equally between the 2 loading rollers. Load दोनों adding rollers में equal तरीके से वितरित होना चाहिए. And all rollers shall be mounted in such a manner that the load is applied axially and without subjecting the specimen to any torsional stresses or restraints. सभी rollers ऐसे mount होने चाहिए कि load axially लगे और specimen पर कोई भी torsional stress या restraint न पड़े. One suitable arrangement which complies with these requirements is indicated in Figure 3. इन requirements को पूरा करने वाला एक suitable arrangement Figure 3 में दिखाया गया है. 8.3 Procedure. Test specimens stored in water at a temperature of 24 degrees to 30 degrees Celsius for 48 hours before testing shall be tested immediately on removal. Test specimen को 24 degrees to 30 degrees Celsius पानी में 48 घंटे रखें और पानी से निकालते ही specimen को wet condition में टेस्ट करें.
The dimensions of each specimen shall be noted before testing. Test से पहले हर specimen के dimensions note करें. No preparation of the surfaces is required. Specimen की surfaces की कोई extra preparation नहीं करनी है. 8.3.1 Placing the specimen in the testing machine. The bearing surfaces of the supporting and loading rollers shall be wiped clean. Supporting or loading rollers की bearing surfaces को clean करें. And any loose sand or other material removed from the specimen surfaces. Specimen की surfaces पर अगर loose sand या कोई भी material है तो उसे भी हटा दें. The specimen shall then be placed in the machine such that load is applied on the uppermost surface as cast in the mold. Specimen को machine में इस तरह रखें कि load uppermost as cast surface पर लगे. Along two lines spaced 20.0 or 13.3 centimeters apart. Load two lines में लगेगा जिनकी spacing 20 centimeters, 15 centimeter specimen, 13.3 centimeters, 10 centimeter specimen. The axis of the specimen shall be carefully aligned with the axis of the loading device. Specimen का axis loading device के axis के साथ बिल्कुल align होना चाहिए. No packing shall be used between the bearing surfaces of the specimen and the rollers. Specimen और rollers के बीच कोई भी packing material नहीं रखना है. The load shall be applied without shock and increasing continuously. Load shock-free और continuously बढ़ाएं, such that the extreme fiber stress increases at approx 7 kilograms per square centimeter per minute. Load इस तरह बढ़ाएं कि extreme fiber stress equals 7 kilograms per centimeter per minute बढ़े. That is at a rate of loading of 400 kilograms per minute for 15 centimeter specimens and 180 kilograms per minute for 10 centimeter specimens. Equivalent loading rate: 400 kilograms per minute, 15 centimeter specimen, 180 kilograms per minute, 10 centimeter specimen. The load shall be increased until the specimen fails and the maximum load recorded. Load specimen के fail होने तक बढ़ाएं or maximum load P record करें. The appearance of the fractured faces and any unusual features shall be noted. Fracture होने के बाद face का appearance और कोई unusual feature हो तो उसे note करें. 8.4 Calculation. The flexural strength shall be expressed as the modulus of rupture phi. Flexural strength को modulus of rupture phi के रूप में निकाला जाता है. Formula: when A is greater than 20 centimeters or 13.3 centimeters, FB equals PL by BD2. When A is between 17 to 20 centimeters or 11 to 13.3 centimeters, FB equals 3 P by BD2. If A is greater than 17 centimeters or 11 centimeters, test result discarded. अगर A की value 17 centimeters या 11 centimeters से कम हो जाए तो test discard करना होगा. 8.5 Report. The report shall include identification mark, date, age, curing, size, span, max load, fracture position, modulus of rupture, and fracture appearance. Report में ये जानकारी जरूर होनी चाहिए. Identification mark, date of test, specimen age, curing conditions, specimen size, span length, maximum load, P, fracture position, A, modulus of rupture, FB, concrete का fracture appearance.